बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ फाज़ला। वेलकम टू माय चैनल। आपको याद होगा हमारी लास्ट वीडियो हमारे चैप्टर नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड के वर्ड्स मीनिंग्स के बारे में थी। तो बच्चों, आज हम उसी पेज नंबर 2 की पैराग्राफ नंबर 1 to 5 की ट्रांसलेशन इनटू उर्दू करने जा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और अपना आज का लेक्चर शुरू करें। ट्रांसलेट पैराग्राफ नंबर 1। Arabia is the land of unparalleled charm and beauty. Arabia is the land, عرب سرزمین ہے, of unparalleled charm, بے مثل دلکشی, and beauty, اور حسن و جمال کی. With its trackless deserts, اپنے بے سراغ صحراؤں کے ساتھ, of sand dunes, ریتلے ٹیلوں کے, in the dazzling rays, چندیا دینے والی کرنوں میں, of the tropical sun, بے حد گرم سورج کی. بے حد گرم سورج کی چندیا دینے والی کرنوں میں, اپنے ریتلے ٹیلوں کے بے سراغ صحراؤں کے ساتھ, عرب بے مثل دلکشی اور حسن و جمال کی سرزمین ہے. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. Its starry sky, اس کے تاروں بھرے آسمان نے, has excited, جلا بخشی ہے یا پرجوش کیا ہے, the imagination, تخیل کو, of poets, شعراء کے, and travelers, اور مسافروں کے. اس کے تاروں بھرے آسمان نے شعراء اور مسافروں کے تخیل کو جلا بخشی ہے. It was in this land, یہی سرزمین تھی جس میں, that the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے, in the city of مکہ مکرمہ, مکہ مکرمہ کے شہر میں, which is about 50 miles from the Red Sea, جو کہ بحیرہ احمر سے 50 میل کی مسافت پر واقع ہے. یہی سرزمین تھی جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے شہر میں پیدا ہوئے, جو کہ بحیرہ احمر سے 50 میل کی مسافت پر واقع ہے. This was paragraph number 1, students. Now let's move on to paragraph number 2. The Arabs possessed a remarkable memory. The Arabs possessed, عرب رکھتے تھے یا عرب مالک تھے, a remarkable memory, ایک شاندار حافظے کے, and were, اور تھے, an eloquent people, ایک فصیح و بلیغ قوم. عرب شاندار یادداشت یا حافظہ رکھتے تھے اور فصیح و بلیغ قوم تھے. Their eloquence, ان کی فصاحت, and memory, اور حافظے نے, found expression, اظہار پایا, in their poetry, ان کی شاعری میں. ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کی حافظے نے ان کی شاعری میں اظہار پایا. Every year, ہر سال, a fair was held, ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا, for poetical competitions, شاعری کے مقابلوں کا, at عکاظ, عکاظ کے مقام پر. ہر سال عکاظ کے مقام پر شاعری کے مقابلوں کا میلہ منعقد کیا جاتا تھا. It is narrated, بیان کیا جاتا ہے, that حماد said to Caliph ولید بن یزید, کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا, I can recite to you, میں تمہیں پڑھ کر سنا سکتا ہوں, for each letter of the alphabet, حروف تہجی کے ہر حرف سے, 100 long poems, 100 لمبی نظمیں, without taking into account, شمار کیے بغیر, short pieces, چھوٹے چھوٹے حصوں کو. And all of that was composed exclusively, اور وہ سب جو کہ خاص طور پر تشکیل دیا گیا تھا, by poets, شعراء سے, before the promulgation of Islam, اسلام کی نشر و اشاعت سے پہلے. بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا, میں تمہیں حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 لمبی نظمیں پڑھ کر سنا سکتا ہوں, چھوٹے چھوٹے نظموں کو شمار کیے بغیر, اور ان سب کو جو کہ اسلام کی اشاعت سے پہلے شعراء نے خاص طور پر تشکیل دیا. It is no small wonder, اس میں کوئی معمولی تعجب نہیں, that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation and preservation of his work. اس میں کوئی معمولی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ بزرگ و برتر نے اپنے آخری پیغام کو پہنچانے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا.
This was paragraph number 2 and now it's paragraph number 3. In the 5th and 6th centuries, 5वीं और 6वीं सदियों में mankind stood on the verge of chaos. इंसानियत इंतशार के धाने पर खड़ी थी. It seemed, ऐसा लगता था, that the civilization के तहजीब which had taken 4,000 years, जिसने 4,000 साल लिए to grow अफजाइश के लिए, had started crumbling, रेजा रेजा होना शुरू हो गई थी. ऐसा लगता था कि वो तहजीब जिसने अफजाइश के लिए 4,000 साल लिए, वो अब रेजा रेजा होना शुरू हो गई. At this point in time, वक्त के इस नुक्ते पर अल्लाह ऑलमाइटी raised a रसूल among themselves. अल्लाह ताला ने उनमें से एक रसूल को मबूस किया to lift the humanity, कि इंसानियत को निकाले from ignorance, जहालत से into the light of faith, ईमान की रोशनी की तरफ. जी बच्चों, तो ये था पैराग्राफ नंबर 3 जो मैंने ट्रांसलेट किया. आई होप आप लोगों ने गौर से सुना और आपको समझ आ गए ये तीनों पैराग्राफ्स. इसमें से अब जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं हम पहली वीडियो में उनको समझ चुके हैं, जान चुके हैं. आप लोगों ने इसके साथ साथ इनके सिनोनिम्स पर भी ध्यान देना है, क्योंकि ये जो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए जाते हैं ना, इनके सिनोनिम्स भी आपको ऑब्जेक्टिव पेपर जो है उसमें दिए जाते हैं. तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको याद रखना है और सारे सिनोनिम्स भी इसके याद रखने हैं. Now we're going to translate paragraph number 4. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के थे, he spent most of his time, वो अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते in solitude, तन्हाई में, and meditation और गौर व फिक्र या मुराकबे में. In the cave of Hira, गार हिरा में, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to retire with food and water, वो खाना और पानी लेकर चले जाते, and spend days and weeks, और दिन और हफ्ते गुजारते in remembrance of Allah Almighty, अल्लाह ताला की याद में. पैराग्राफ नंबर 5. The period of waiting had come to a close. इंतज़ार का अरसा ख़त्म हो गया था. His heart was overflowing. उनका दिल लबरेज था. Overflowing लबरेज था with profound compassion, गहरी हमदर्दी से, for humanity, इंसानियत के लिए. He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had a pressing urge to eradicate wrong beliefs. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शदीद ख्वाहिश थी to eradicate wrong beliefs, गलत अकायद को जड़ से उखाड़ देने की. सोशल लीवल्स, माशरती बुराइयों, क्रूअलिटी, जुल्म एंड इनजस्टिस और नाइंसाफ़ी को. The moment had arrived, लम्हा पहुंच चुका था, when he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was to be bestowed with नबूवत, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजे जाना था. One day, एक दिन, when he was in the cave of Hira, जब वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में थे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम came, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, and conveyed to him, और उन्हें पहुंचाया, the following message of Allah Almighty, अल्लाह ताला का मंदरजा झेल पैगाम. पेज नंबर 3 पर ये पैराग्राफ नंबर 5 का जो पार्ट है वो हम अब उसकी ट्रांसलेशन करेंगे. That is, read in the name of thy Lord, अपने रब के नाम से पढ़ो. Who created, जिसने तख्लीक किया. Created man, इंसान को तख्लीक किया. From a clot of congealed blood, जमे हुए खून के लोथरे से. Read, पढ़ो. And thy Lord is most bountiful, और तुम्हारा रब सबसे ज़्यादा मेहरबान है. Who taught, जिसने सिखाया. The use of, इस्तेमाल. The pen, कलम का. Taught man, इंसान को सिखाया. That which he knew not, जो कि वो नहीं जानता था. कुरान की वर्स है ये 96. और ये हो गया हमारा पैराग्राफ नंबर 5. वेल स्टूडेंट्स, ये था हमारे ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 1 to 5 की. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. इसको अच्छे से याद करें ताकि आपकी एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी तैयारी हो सके. और इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पेज की ट्रांसलेशन के साथ और उसके वर्ड्स मीनिंग्स के साथ. और टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़.